तो अगर तुम्हारे पास एक फाड़ू बिजनेस आइडिया है बट तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे शुरू करने के लिए, देन वॉच टिल द एंड बिकॉज आई विल टेल यू द एग्जैक्ट स्टेप्स यू नीड टू टेक और मैं तुम्हें एक पूरी लिस्ट भी दूंगा ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट हु कैन हेल्प यू इन दिस प्रोसेस। Zerodha, Zoho, Zomato, Razorpay, इन सब में क्या कॉमनैलिटीज हैं? ये सारी $1 billion कंपनीज हैं एंड नॉट ओनली दैट दे वर ऑल सेल्फ फंडेड टिल दे अचीव्ड अ वेरी बिग लेवल। एंड आई विल हैव टू गिव यू अ वार्निंग, जो मैं तुम्हें बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है और तुम्हें कोई कुछ और चीज बता रहा है, they are basically lying to you। और मैं तुम्हें कोई क्विक फिक्स नहीं दे रहा हूँ बट अ वेरी डूएबल, वेरी प्रैक्टिकल एंड अ वेरी सेफ वे टू डू अ स्टार्टअप। एंड मैं इतनी अथॉरिटी से इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव बिल्ट माय ओन सर्विस बेस्ड बिजनेस इन द पास्ट 2 years एंड स्केल्ड इट अप टू 50 lakh rupees। एंड अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो बिकॉज द नेक्स्ट 6 months आई विल शो यू हाउ आई बिल्ड a 1 crore a year business। बट विद दैट वार्निंग आउट ऑफ द वे, चलो शुरू करते हैं असली वीडियो। मैं तेरा ढोकला बनाऊंगा। Entrepreneurs हैं So I want to give you a real life example of one of the most successful and profitable bootstrapped companies of India called Zerodha। तुमने काफी सारे फाइनेंस क्रिएटर्स को इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा, तुमने शायद खुद भी यूज किया होगा Zerodha। But the story of the company and their founders is even more interesting than the product itself। Even people like Ashneer Grover जो typically बहुत ही cynical हैं और रोस्ट करते रहते हैं फाउंडर्स को, even he is super impressed by Nikhil and Nitin Kamath। And the crazy part is Nikhil Kamath had actually dropped out of school when he was just 14 years old। वो अपने आप रहने लग गया, he started working in call centers, obviously वो trading भी कर रहे थे साइड पे, and he did that until he founded the company in 2010 with his brother। And even Nitin Kamath, he was also working jobs here and there in call centers and he was also investing on the side। और यही कहानी of most millionaires and billionaires। So what I learned out of this was most of these successful people follow a very predictable pattern and हम उसी की आज बात करने वाले हैं। And I've segregated it into 4 main steps। Okay, so step 1 is find your calling and not your passion। देखो यार, I don't give a fuck about your passion। मुझे लगता है बहुत overrated है and तुम्हें disciplined होना चाहिए instead of being passionate। But having said that, तुम्हें एक ऐसी फील्ड चूज करनी पड़ेगी जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। बिकॉज तुम्हारे स्टार्टअप करने से पहले डजंट मैटर कि क्या इंट्रिकेसीज हैं, क्या डिटेल्स हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड अ थिंग व्हिच यू आर इंटरेस्टेड इन एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द गैप्स एंड प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय पीपल। बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स बट दे गेट बोर्ड टू क्विकली एंड इतने ज्यादा एवरेज लोग हो चुके हैं हर इंडस्ट्री में, इट जस्ट मेक्स नो सेंस। सो फाइंड योर कॉलिंग एंड स्टिक टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज द मिलियंस एंड बिलियंस only come with mastery। And now that you've found your calling, let's get into the next step। और भाई ये इतना unconventional है, but let's see what it is। So step 2 is getting a job। तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी in the field you are interested in। गजब बेइज्जती है। देखो मुझे पता है काफी काउंटर इंट्यूटिव है और तुम ये वीडियो बंद करना चाहते हो, but just hear me out for 2 minutes। Jeff Bezos before he started Amazon, उनकी एक बहुत अच्छी जॉब थी in Wall Street and it was there that he learned about the growing demand of e-commerce which gave him the idea of starting Amazon। Reid Hoffman was working with a company called Fujitsu और उस कंपनी में he was working on a social software project जहाँ से उन्हें insights मिली before he started LinkedIn। Jan Koon, the founder of WhatsApp, was working in Yahoo as an infrastructure engineer and here he got the understanding of a reliable user-friendly solution which was needed by all, which is till date the most critical for his success with WhatsApp। तो क्या तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है? All of these billionaire founders have worked in the industry they were interested in even before the thought of their own ideas in their own companies and it helped them in 2 major ways। So how they help? Number 1, it helps you gain insights as to what are the problems being faced and उस market में क्या gap तुम fill कर सकते हो because end of the day सबसे successful companies in the world are solving a gap faced by human। And number 2, since तुम 0 पैसे से अपनी company शुरू करना चाहते हो, getting a good job will help you start making money and you can start saving for cost of tools, cost of marketing, cost of hiring people etc। और ये बात जरूरी नहीं है कि तुम अपने जॉब में 20 साल तक रहो, तुम 1 साल काम करो, 2 साल काम करो, समझो कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ऐसी चीज है जो तुम्हारी कंपनी से तुम अभी काम कर रहे हो वो नहीं सॉल्व कर पा रहे एंड यू कंसिस्टेंटली हियर फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड पीपल ऑफ व्हाट प्रॉब्लम्स एंड व्हाट गैप्स दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेसिंग इन द मार्केट एंड तुम इजीली 2 से 3 घंटे बिफोर गोइंग टू द जॉब
एंड 2 से 3 घंटे आफ्टर द जॉब लगा सकते हो इन बिल्डिंग योर स्टार्टअप. एंड वाइल वी आर एट द टॉपिक ऑफ रेजिंग मनी, अगर तुम ज्यादा ही एरोगेंट हो, ज्यादा ही कॉकी हो एंड यू डोंट वांट टू डू अ जॉब, देन यू कैन गो एंड डायरेक्टली फंड रेज. सो लेट्स डिस्कस अ कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स व्हिच यू कैन यूज टू हेल्प यू फंड योर स्टार्टअप. सो काफी सारे सक्सेसफुल कंपनीज इन इंडिया लाइक Zomato, हेल्थ कार्ड, MobiKwik, इन सब ने काफी सारा फंड रेज किया है थ्रू VC प्लेटफॉर्म्स लाइक Sequoia Capital, Axel Partners, Matrix Partners, etc. ये सारी इंडियन फर्म्स हैं एंड फॉरेन फर्म्स लाइक Tiger Global, Y Combinator have also invested heavily in Indian companies. And by the way, अगर तुम्हें नहीं पता VC का क्या होता है, VC means venture capital. It is basically a bunch of rich people or interested parties and companies coming together, combining their capital and then investing in companies. And इनका बहुत ही diversified portfolio होता है. तो अगर मानो इनके पास together एक साथ मिला के 100 करोड़ है, they'll invest 10 crores in 10 companies, and even though 9 might fail or not give them big returns, at least one they are expecting कि उनके जो 10 करोड़ थे वो 1000 करोड़ बना देंगे. That is how VC firms work. तो तुम खुद की रिसर्च कर सकते हो, but I will tell you something interesting which I have found. So if you go to Sequoia Capital's website, वहाँ पे तुम programs में जाओगे, this will open up a list of 3-4 different programs they're running at any given time, and these are amazing for entrepreneurs and startups. So Spark, Build, ये सारे काफी अच्छे programs हैं. And talking about the last cohort of Surge, there are more than 30+ founders in varied fields like AI, metaverse, healthcare, etc. And this can also help you build a very good network. So for the full list of VC firms in India, scroll down and check the pinned comment section. और तुम scroll कर ही रहे हो तो subscribe और like भी कर दो. So step 3, now तुम्हें अपनी calling मिल चुकी है. तुमने job ले ली थी तो तुम पैसे भी बचा पा रहे हो. और अगर तुम arrogant थे, you might have even raised some funds, right? And obviously अगर तुम अमीर बाप के औलाद हो, you are no better than the person who raised funds. So now it is time to build the dream team. तो अगर तुम history को study करोगे, you will find that सबसे successful companies जो रही हैं आज की डेट में, they have all had 3 founders. So founder number 1 who handles sales and distribution, founder number 2 जो operations and people management करता है, and founder number 3 जो technicalities और product based चीजें handle करता है. And this just goes on to show कि अगर तुम्हें एक बहुत बड़ा startup build करना है, you will need co-founders or at least a good team. And since now you already have money because of the job or since you have fundraised, तुम networking शुरू कर सकते हो and you can start finding and interviewing people who can be part of your team. अगर तुम्हारे organization में कोई बहुत ही अच्छा इंसान है who's very hardworking, very smart, and he's also looking for a job change, I would advise that you go ahead with him only because वो भी तुम्हारी same industry में है. He also understands the problems and the gaps that need to be filled, and तुम्हारा बिल्कुल bandwidth सही बैठेगी एक साथ. So even before I started my business, मैंने networking शुरू कर दी थी on platforms like LinkedIn and Instagram to go out and find people who are better than me in the job I wanted to do, in the business I wanted to start. And this is so crucial because you can't be too cocky or arrogant, and तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए. And हो सकता है तुम्हें थोड़ा time लगे to find a really good teammate or a really good employee. Like for example, I had to fire my first 2 or 3 employees because वो ढंग से काम नहीं करते थे या they were too arrogant or whatever it was. And now at this moment, जो मेरा teammate है Abdul, has been with me for the past 2.5 years, and I've never had to look back and never had to hire anybody else. And over the years, he has just become an industry expert himself. So once you have found your dream team, show them the big picture, keep them motivated, उन्हें अच्छी salaries दो, but only what you can afford. Don't overhire or overpay. Don't do that stupidity. Step 4, now it's time to grow your company. अगर तुम founder हो, तुम्हारा बस job होना चाहिए to do marketing, advertising and get sales. Throughout the day, your focus should be just getting sales and getting that cash flow going on, because only once you get that cash flow will you be able to fund other things as well. और फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा service based business है या product based business है, ये सब के लिए apply करता है. और जब तुमने offer, product, operation सारी चीजें set कर दी, now rest of the work should be outsourced completely to other people. Your job as a founder, sales, and rest of the things outsourced to other team members and other teammates. तुम काफी सारी चीजें automate भी कर सकते हो using tools like Zapier, Pabbly, etc. And since you're focusing on sales, a very large part in today's day is to tell your story. अपनी story बताओ on different platforms like LinkedIn, Instagram, YouTube, etc. Tools use कर सकते हो like Hootsuite और Buffer to post together at once on all these platforms. And since हम इस topic पे हैं, तो मैं एक और चीज के ऊपर बात करना चाहता हूँ, and it is best explained in this TED Talk called Start with the Why by
साइमन साइनिक एंड एज द नेम सजेस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द व्हाई। हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल आर्टिस्ट रहे हैं, डिफरेंस ये है उनमें से एक आर्टिस्ट डाइड विद नो मनी इन हिज हैंड एंड नॉट इवन फूड टू ईट एंड ही डाइड बाय सुसाइड। He got famous after he passed away, and the other person lived a life of luxury, lot of money, with a high society around him, lot of women, everything, right? And this person was Picasso. The difference is, जब भी Picasso कोई exhibition करता था, he would actually get his painting, उसको पर्दे के पीछे छुपा देता था, and he would tell people, he would call all of these fancy people, rich people, and he would tell these people कि भाई why has he made this painting? Why is this painting so close to his heart? And तुम मारोगे नहीं, इससे कि पहले वो painting reveal करता, people were already throwing money at him to buy that. So this is exactly why you should be telling your story. These platforms are still very very good to share your story and get a lot of eyeballs for completely free. और यार बहुत सारे tools है market में to automate this whole thing या which can help you in the process. तुम scrape भी कर सकते हो data to get started. Tools like Phantom Buster are really really good. मैंने खुद use किए हैं and they work like a charm. It can also help you scrape profiles and emails and phone numbers. तो तुम वो स्क्रैप करके उन लोगों को रीच आउट करना भी शुरू कर सकते हो थ्रू ईमेल्स एंड लिंक्डइन एटसेट्रा। सो ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड अगेन मैं माफी मांगता हूँ अगर तुम्हें लगा कि ये शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं दिया मैंने तुम्हें, बट इफ यू वांट टू ग्रो अ रियली बिग कंपनी, अ रियली बिग स्टार्टअप, यू विल हैव टू फॉलो दीस स्टेप्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।